Hello, students. Well, in today's science exploration, we are going to see how light interacts with molecules in our atmosphere. ओके इसके अलावा हम लोग जो है ये भी चेक देखेंगे कि कैसे जो है लाइट का एब्जॉर्प्शन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है लाइट की एनर्जी जो है उसको भी जो है हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से लाइट की एनर्जी जो है वो मोशन क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा जो है हम ये चेक करेंगे कैसे माइक्रोवेव से अल्ट्रावायलेट के रेंज में कैसे लाइट की एनर्जी जो है वो बढ़ती है, अ, किस तरह की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। बेसिकली मॉलिक्यूल का मोशन जो है वो कैसे जिस तरह के लाइट को ये एब्जॉर्ब करता है उस पर डिपेंड करता है। और साथ ही साथ हम ये भी आइडेंटिफाई करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल जो है वो कैसे अफेक्टेड होता है जब ये लाइट के साथ इंटरेक्ट करता है। ओके, सो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी प्रोडक्टिव सेशन, आई assume. So let's start with it. First, we are going to start with microwave. कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल्स के साथ हम ट्राई कर रहे हैं। आई विल बी चेंजिंग डिफरेंट मॉलिक्यूल्स नाउ। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, now let's go back to carbon monoxide and now let's try with the infrared. Nitrogen again, oxygen, carbon dioxide, let's try with methane now, water now, nitrogen dioxide, oxygen, sorry, ozone, visible light. Let's try the visible light and its interaction with carbon monoxide first.
कोई डिफ्लेक्शन नहीं नोटिस कर रहे हैं हम। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, let's go back to carbon monoxide now, and let's try with ultraviolet rays now. So you can see that ultraviolet rays are not reflected by these molecules. Let's see if water does any trick with it. Now, वाटर भी इस पर कोई असर डालता नहीं दिख रहा है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ ये इंटरेक्ट करता है और उसमें से एक जो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ये ब्रेक कर देता है। Let's see with ozone. So that way, like ozone molecule is broken by ultraviolet rays. So I hope you enjoyed this fun little activity which showed how light particles interact with the different molecules present in our atmosphere. Alright, so let's end the session here. Bye bye.